atom loses or gain electron? Fatma, you will tell. So that it can get a full outer shell. Exactly. Full outer shell electronic configuration means stable electronic configuration, because for all the atoms, uh, noble gases is the benchmark. The electronic configuration of noble gases is the benchmark. They want to complete their outermost shell, and how they will complete? They must have, if an atom has only one shell, so it will, the desire of that atom will be to have at least, not at least, exactly two electrons in their outermost shell. And for others, like having more than one shell, they will go for 8 electrons. And this rule for 8 electrons is known as octet rule, and the rule for 2 electrons for the very first shell is known as duplet rule. Understood? Yes, sir. Okay. So it is the symbolic representation or equation form for showing the electron gaining and electron losing in an atom. Okay, you should know, it will help you in the redox reaction as well. For example, calcium has lost 2 electrons. So how we will show? We can show the lost electron after the arrow. If we are showing that electron has been lost, so we will show after the arrow. All right. For example, in this case, calcium Yes, has sir. 2 positive charge. What does it mean? It means calcium is losing 2 electrons. So we will mention 2e negative. The charge on E, which is negative, is not representing that it has gained the electron. It is the symbolic representation of electron which carry negative charge. So E negative doesn't mean that some electron has been gained. Okay, you can normally we show negative when electron has been gained. Are you getting my point? Because most of the student confuse in it. In this case, in oxygen, oxygen has gained 2 electron. That's why after the arrow, O has 2 negative charge, and the gaining of electron shown before the arrow. Any question? No, sir. No, sir. Now see the other examples. And if you have any question, you will ask. Otherwise, you will raise your hand. Then we will move forward. Alright, now we will study the definition of an ionic bond. It has two parts. One is that ionic bond is the electrostatic. This word electrostatic will use only where we have the certainty that charges are there, opposite charges are there. If opposite charges or charges are not mentioned, we will not use electrostatic, the term electrostatic. So ionic bond has positive negative charges, means cations and anions. So an ionic bond is the electrostatic force of attraction between positive and negative ions. This definition will give you 2 marks. And dot and cross diagram, most of the students in hurry, they ignore the actual logic of dot and cross diagram. Dot and cross diagram represents that if, for example, we are showing the bonding between sodium and chloride, so one of the, any one of the atoms electrons will be shown with dot or cross, and vice versa. Let's see the example of dot and cross diagram. This is the standard procedure representation of showing ionic bond. Okay, you will follow the same thing. For example, for sodium, you know that sodium will lose one electron, so it will carry one positive charge. So we will draw, we will mention the brackets, then
at the subscript, non sorry, superscript, you will write the charge, and same for the negative ion. And you can see that the electrons of the sodium is shown with dot, and sodium has lost two. Both the sodium has lost one electron, and that one electron is mentioned here. All right. So I hope you will Yes, follow sir. when I will give you the question, apply question. You will follow the same pattern. Okay, we had one more question here for the electronic configuration that you must know. If you are showing the ion of any particular metal or non-metal, so you have to be very careful that in ion we don't show, we show uh, the electronic configuration which includes the losing or gaining of the electron. Like in the case of aluminium, we original atom, the neutral atom has 283, but after becoming an ion, sodium aluminium belongs to group number 3, so it will lose 2 electron. We will not mention, sorry, 3 electrons, so we will not mention the last shell electron. Same for the oxygen. Is it going good? All right, so Yes, sir. let's ready for the apply question. Please proceed. You have to record your answer and WhatsApp me. You can WhatsApp on the group, no problem in this case. सर 1A में सिर्फ फॉर्मूला लिखना है. Yes, Sehak beta. Formula of the ion. Okay. Like ओके सर. कैल्शियम आयन है तो उस पर क्या कैसा फॉर्मूला होगा उसका? Ca2 पॉजिटिव इज दी जी जी. चार्ज होगा. फॉर्मूला. जी, सल्फाइड का होगा S-2 नेगेटिव ऐसे ही. हम्म. ओके सर, समझ गया.
जी बच्चों, बाकी बच्चों का क्या स्टेटस है? हमदा बेटा, व्हाट्स योर स्टेटस? I'm a bit confused in the dot and cross diagram. All right, no problem. I am showing you the worked example again. For example, in this case, the formula was Na2O. Na2 means two sodium, which I mentioned, and both the sodiums releasing one electron, and oxygen required 2 electron. All right. So, is there any problem in this worked example? Yes, Hamda. Is this worked example clear? Yes. Then I will tell you that what you can do in MgF2. So similarly, Mg belongs to which group? Mg belongs to group 2. And the metals of group 2 loses how many electrons? 2 electrons, because as per the electronic configuration, they have two outermost shell electrons. All right. And fluorine belongs to which group? Yes. Will you please tell me? Group 8. Group 8. No, wait. Group 8 elements 7. never involves in any type of bonding. Group 7. So group 7 means how many electrons are required for the members of group 7? One more. One more. So magnesium is releasing 2 electrons, which can be gained by 2 fluorines. Now, is it easy now? Yes, I got it. Yes. Please send the diagram. I am still waiting for the response from other students. Fatma has given the reason. Suhail and Shayak. सर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना रहा हूँ। जल्दी बना लो, रफ बना लो, कोई मसला नहीं। सेम सर, मैं भी वही कर रहा हूँ। जल्दी भेजो, मैं आगे बढ़ूँ ताकि। Sir, I just sent mine. Yes, but I just checked it. Actually, when I was teaching, I told you that same pattern should be followed. It is the standard one. There are no brackets in your dot and cross diagram. There are no charges in your dot and cross diagram. And in this standard diagram, we have shown all the shells. You have shown only outermost shell. Alright, when they will ask you to draw the outermost shell, then you can draw. But when we are practicing, so we should draw the diagram as it is. So please edit your diagram. Is my instruction clear? Yes. Thank you, beta. लड़कों, आप बहुत टाइम ले रहे हैं। इतना टाइम तो नहीं लगता इसमें। क्या कर रहे हो तुम लोग?
जल्दी बताएं बेटा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. हेलो हेलो हेलो, शेख सुहेल, वेयर आर यू? सर कर रहा हूँ, एक सेकंड। करो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें. कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, जैसे दूसरे बच्चे पूछे आप पूछ लो, कोई मसला नहीं. सर कंफ्यूजन नहीं है, गलत बना दिया तभी सही बना के भेज पर रहा रफ हूँ। बनाओ, जल्दी से भेज दो. Sir, I have a question. प्लीज. Why does losing electron makes the ion gain a positive charge? For example, the atomic number of magnesium is 12. This represents that magnesium has 12 protons, isn't it? Isn't it? Yes. And this also represents that magnesium has the same number of electrons, means 12 protons, 12 electrons. If magnesium is losing 2 electrons, so what will be the final answer? Plus 12 minus 10 is equals to plus 2, isn't it? So this is the case. By losing the electrons, So it's positive because of the proton. because of the excess protons, because after losing the electrons, automatically the number of protons increases. This is the reason. Okay. And vice Yes, versa I for the got it. negative. Difficulty. Yes, Suhail. You have sent me the diagram which you have crossed, and there are 2 fluorines. You have mentioned only 1. Are you confused in it? Yes, a little bit, sir. सर मैं भी कंफ्यूज हूँ सर। या अल्लाह, भाई क्यों कंफ्यूज हो? इतनी मुश्किल बातें थोड़ी हैं आपने. सर मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि हमें बॉन्ड वाला बनाना है, मतलब जिसके साथ वो बॉन्डेड है, या सेपरेटली बनाना है। भाई ये एग्जाम्पल दी सेम थी ना, सर ये सेम। ये एग्जाम्पल दी ना यहाँ पे, ये ऐसी बनानी है बस. इन समझो ये 2 सोडियम है, इनकी जगह 2 फ्लोरीन आ जाएंगे, इस एक ऑक्सीजन है, इसकी जगह पे एक मैग्नीशियम आ जाएगा, बस. अच्छा अब ऐसे थोड़ी एग्जाम्पल मैंने कराई स्क्रीनशॉट नहीं ले हो. लूँ सर इसका? स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ उसका? स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपका फ़ोन. ओके। आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में, ये डायग्राम बना के मुझे भेजना. चलिए, कोवलेंट बॉन्ड्स का जो वर्ड है ना, वो निकला है को से. को मीन्स कोऑपरेशन, या इस तरीके से जितने जो भी मीनिंग्स हैं इनके कंबाइन होके. तो कोवैलेंट मतलब दोनों की, वेलेंट मतलब वेलेंसीज. आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं? यानी कि 2 ऐसे जी, एटम्स जिनकी वैलेंसी सेम हैं, या उनकी वैलेंसीज की रिक्वायरमेंट सेम है. कि एक एटम दूसरे एटम से, एक एटम चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूं, तो वो ऐसा ही एटम से बॉन्ड बनाएगा जिसको दूसरे को भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना हो. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी स्टूडेंट लाइफ में वी हैव ऑब्जर्व सेवरल टाइम्स दैट sometime we are in need of blue pen and sometime we are in need of black pen. तो हम किसी से ब्लैक पेन बोरो कर लेते हैं, अपना ब्लू पेन उसके साथ शेयर कर लेते हैं, तो इस तरह दोनों का काम हो जाता है. तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell. ठीक है। ओके, बल्कि इसको ऐसे नहीं बनाया, कंफ्यूजिंग हो गया. ये बना दें और यहाँ हाइड्रोजन लिख दें. 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तो अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो क्या 2 हाइड्रोजन मिलकर ये काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे,
शेड एरिया में दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, हो गई शेयरिंग, ना लूजिंग हुई ना गेनिंग हुई। दोनों को वेलेंट थे, दोनों की वैलेंसीज एक जैसी थी, दोनों की रिक्वायरमेंट एक जैसी थी, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अगर दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, इन केस ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लें, ऑक्सीजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, 18। सो इट हैज़ 1 2 3 4 5 6। लेकिन जैसे ही हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाले, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, गौर से सुनिए कि इस ऑक्सीजन की डिमांड हमें पता चली, नीड पता चली कि ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर्ड एरिया में डाल देंगे, इस वाले ऑक्सीजन के भी और इस वाले ऑक्सीजन के भी। तो अगर आप गौर से अच्छा। देखेंगे तो ऑक्सीजन के सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 हैं दोनों ऑक्सीजन के सर्किल में। हाइड्रोजन क्योंकि एक एक शेल लगता है, तो इन दोनों के सर्किल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। डिड यू गेट इट? यस सर। जी सर। अब आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना कि ऊपर कुछ सिलेबस की रिक्वायरमेंट होती है, ये जो ऊपर लिखी होती है यहाँ पे, तो एक तो वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स लीडिंग टू अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता चल गया, जारी बात है, शेयरिंग भी इसलिए हो रही है, लूजिंग गेनिंग भी इसीलिए हो रही थी कि भाई इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इसके अलावा ये जो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनकी डॉट एंड क्रॉस स्पेसिफिकली आपको आनी चाहिए, इनकी खास तौर पे आनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। जो चीज़ सिलेबस में दी गई है तो वो तो फिर करनी करनी। ठीक है भाई। सर तो आयोनिक की नहीं है? आयोनिक की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोवेलेंट्स की है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो अब आप क्या करेंगे, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा और कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो, सवाल जवाब करें और कुछ सीख जाएं। सो आर यू रेडी? यस सर। ठीक है, अब हम CH4 की एग्जाम्पल लेते हैं। एक ये रहा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बना दो, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दो, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दो और एक हाइड्रोजन यहाँ बना दो। अब तरीका क्या होता है डॉट एंड क्रॉस का, कि जो रिक्वायरमेंट है वो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन्स जो हैं, जितने भी ये सारे हाइड्रोजन्स हैं, इनको कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? सर इनको एक चाहिए होता एक है। चाहिए होता है ना, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस शेड एरिया में डाल देते हैं। और और कार्बन कार्बन को के अपने 4 चाहिए होते हैं, उसको 4 चाहिए होते हैं, तो एक एक अच्छा, यहाँ डालता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। समझ गया सर। समझे? अब इसको मैंने पिछले वाले सवाल में ये दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए थे असल में। हाँ, आपने वो डॉट एंड क्रॉस दो तरीके की होती हैं। ये वाली जो शेड एरिया वाली है ये कोवेलेंट्स के लिए है, और जो ऊपर एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेने की आप बात कर रहे थे वो आयोनिक की है। आयोनिक। ठीक है, इस काम के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा एक डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं ज़रा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, जी सर। सर उसका शायद मेरे पास वो रखा हुआ है तुम्हारे पास? वो जी जी वो बड़ा वाला। वो रख तो ठीक है, वेरी गुड। वो सारे जमा कर लो तुम, एग्ज़ाम में जाते हुए उसी से रिवाइज कर लेना। ओके सर। ये बनाए मैंने इसीलिए, ये मैंने खुद बनाए, आपको तो पता होगा शायद। जी सर। ठीक है, अब जिन कुछ कुछ की मैं एग्जांपल्स की आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो ये हैं, जैसे हाइड्रोजन की हमने देख ली एग्जांपल, क्लोरीन की एग्जांपल देख लें, HCl की देख लें। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है, और ये सारी एग्जांपल्स CH4 मैंने अभी कराया आपको ये, तो ये सारी एग्जांपल्स देख लें और गौर से देख लें कि भाई कोई किसी में समझ में नहीं आ रहा हो या कोई इलॉजिकल लग रही हो तो मुझे बताएं।
देख लिए सर। गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हैंड रेस कर दें, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आप लोगों को। वो थे सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, क्यों? क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। नाइट्रोजन, बच्चों गौर से सुनिएगा, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5। इट मीन्स इट हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 3. In case of N2, 2 nitrogen will be sharing 3 electrons, so that they have 8 electrons in their outermost shell. Did you get it right? यस सर। So we have the diagram. So in the outer shell, free electrons will be 2 and shared electron will be 3 from each side. It means altogether in the shared area you will find 6 electrons. Are you listening to me carefully? These are the common mistakes which students, sir. I have witnessed that they did such mistakes several times. Sir, can you repeat what you said? I didn't really get it. I said that in case of nitrogen, nitrogen belongs to group number 5, and if it belongs to group number 5, so it must have 5 electrons, 5 valence electrons in their outermost shell. So how many more electrons are required? 3 electrons are required. So what they will do? Yeah. As per the required electron, they will put their 3 electrons in the shared area. Each nitrogen will do the same. So in the shared area you can see how many electrons are there. 6. Okay, and these 2 electrons are free. So altogether in the outermost shell they have 8 electrons, isn't it? I'm not talking about the inner shell. No need to show the inner shell electrons normally in CIs. Okay, bachcho. Now you can see Okay. all the Yes, sir. typical diagrams. Otherwise, I am moving forward. सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। जी बेटा पूछें। सर क्लास के टाइमिंग्स क्या फाइनल हुए हैं? क्लास की टाइमिंग यही फाइनल हुए हैं 9 से 10, मंडे ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे और वेडनेसडे, किन दिनों? अच्छा मंडे टू ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके सर। कल ओके। हमारी, कल क्या है, कल थर्सडे है ना, कल तो हमारी अपनी रेगुलर क्लास होती है 9 बजे। ठीक है, कल वाली क्लास तो मैं लूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों की एक क्लास नहीं ली जो मैंने कल लेनी थी। ठीक है, तो कल आपकी 9 जी बजे सर। वाली क्लास 9 बजे ही होगी। ठीक है, ओके सर। हमदा बेटा आप भी कल 9 बजे वाली क्लास में हमें ज्वाइन करेंगी क्योंकि आपकी भी कल की क्लास मिस हुई है। तो इस तरह इस वीक की 2 क्लासेस पूरी हो जाएंगी और इसी प्रैक्टिस को ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे अगले हफ्ते जब इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे 9 PM, तो हमारी जो एक मिस्ड क्लास है वो भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर तो ट्यूसडे और वेडनेसडे सिर्फ क्लासेस होंगी? ट्यूसडे 9 से वेडनेसडे 10। नॉर्मली रूटीन ट्यूसडे वेडनेसडे 9 से 10, क्योंकि फ्राइडे को मेरा टाइम टेबल बिल्कुल जैम पैक हो जाता है और मैं मस्जिद नहीं जा पाता। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स में और डिटेल्स भी हैं। अब आपने गौर किया कि मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? कोई रिपीट करेगा? सिंपल डिटेल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी हैं ये सब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हें सिंपल मॉलिक्यूल कहने का रीज़न क्या है? द रीज़न they consist of limited atoms. There is no huge network of bonds. If it is CO2, that is CO2, that is it. H2O, that is it. CH4, that is it. But unlike these simple molecules,
we will study about the giant macromolecules in which large network of covalent bonds exist. So that's why they known as giant covalent structures, and these molecules are known as simple molecules. Any doubt? Any question? Because we use such No, sir. language in exams in CIs, simple molecules or whatever the molecule is. Okay, going सर back. ग्रेफाइट और डायमंड ये जी, यही चीज है ना? ग्रेफाइट एंड डायमंड सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, वो जॉइंट नेटवर्क का बॉन्ड रखते हैं. दे हैव जॉइंट नेटवर्क, तो अच्छा वो जॉइंट स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं. अभी हम उसी की तरफ जाएंगे. यानी स्त्री पढ़ ली, कोई मसला ही नहीं है आपके लिए. ठीक है, अब आपका यू हैव टू डू द सप्लाई क्वेश्चन. प्लीज़ प्रोसीड. और ज़रा जल्दी करने की कोशिश करा करें ताकि एक साथ आगे बढ़ सकें. सर इनमें सिर्फ आउटर शेल का बनाना है ना? Yes, in covalent molecules always go for the outer shell. ओके सर.